And then once he's done, we can start with the Q&A. Yeah? All right. Thank you, guys. Between the two countries, United Kingdom and India. The recent India-UK joint statement agreed during the visit of Sir Keir Starmer set out a bold ambition for the India-UK Comprehensive Strategic Partnership, spanning trade, technology, climate, defense, and education. It absolutely signals a decade of strategic alignment and growth between the two countries. Now, at the same time, India's own transformation agenda in education is reshaping the global landscape. Private program in advancing diabetes care, and this was done in collaboration with Lupin, the Indian multinational pharmaceutical company based in Mumbai. We developed and delivered programs across India to enhance the expertise of clinicians, doctors, pharmacists. Values that mean equality and fairness for everybody. And we have a very strong ethical government that, safety, any attacks on national students is just absolutely not tolerated in the United Kingdom. So as a starting point, the government would not tolerate anything like that. Yes, I can understand geopolitically, particularly in the different hemisphere, the very significant tensions that students from the global majority might be worried about. Yes, I can absolutely understand. International students. So the government has not said that there's a restriction. So that is not the case. What the government has asked universities to do is to make sure that you go through proper checks, and if you do your checks properly, there is no reason why any student will be rejected. So there is no dreams or experience what life is on the other side. So when a student is coming to the UK, and I'm just saying from the UK perspective, beginning with that first, the first thing that they get to see is there is a lot more than what we have seen, what we have grown up with. There's a lot to learn. They do get a little bit of a culture shock as well in the beginning, because they do see a world outside and they do see a world full of opportunities and learning and growth. So UK offers that. Birmingham City University is known for its facilities. It's known for its focus on skill development. It's known for the quality-driven institution that we are. So when a student comes to us, when a student invests in their future, so they're not paying just their tuition fees, they're investing in their own future. And the way I talk to a student is, I simply ask. It's a complete planning. पैकेज होता है, मान लीजिए पैकेज होता है पूरे रेडिएशन का। तो प्रेजेंट जो मशीन यूज कर रहे हैं उसको take a picture. Ready? So you can say something about the in comparison to Australia and Canada, how UK is preferred destination for students. Okay, just to repeat what I said earlier on, yes. Well, I think the UK offers a lot more than any other nation on education. It's about the student experience, it's about how you learn about the English culture, the values that the nation holds, the welcoming of international students, and the impact international students ultimately make, both within the United Kingdom, but also as they leave us and head overseas. Many, many world leaders today have been educated in the United Kingdom. So the United Kingdom offers a far better higher education experience than anywhere else in the world. Are you getting government support of government of India supports in your programs? Yes, so the Indian consulate, they have a consulate in Birmingham City. We meet with them regularly. The consulate also meets with our Indian students to make sure that students are happy, are supported, and yes, we make sure that wherever we need support, there is there. And I have no doubts, having spoken to the Consulate General in Birmingham, we have his full support. And it's good he supports us, because I want him to meet his students from India, and for him to be reassured that we are supporting those students in the best way we can. Is there any number, how many students currently enrolled in Birmingham University?
university, So, Indian students? Indian students are just over 2,000 Indian students, yes, and we have about 5,000 international students, but over 2,000 are from India. And what are you looking for numbers in next 5 years? It's we're not chasing numbers, if that makes sense. It's really about partnerships, yes, and if we stay at 2,000 for the next few years, then good. But we want we want to have good students who are happy, and ultimately who get the jobs they come to get. That's the most important thing. How we ensure we have the right resources to support those students to get the jobs. Sometimes if you have too many students, it can become a challenge. So it's the right number of students that allows them to get what they want and allows us to support them. UK economy and stability. Is the UK still attractive given uncertainty around post-study work rights? Sorry, I didn't hear that question again. Again, I Post-study work. Post-study work, yes, of Yeah, course, yeah. yeah. And the government has said that's 18 months post-study work. That is in force, that is in place, and we support students to get that right. Thank you, yes. Is there any economic instability hamper this all the programs and initiatives? No, no economic instability for us. And, if anything, the UK government, the GDP grew recently, and inflation is coming down. So, from an economic point of view, the UK is turning a corner, and that means more opportunities and jobs for our students. Great, thank you. Okay, अरे जी मैम सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा फिर श्योर नमस्ते, मेरा नाम दिशा गुप्ता है। मैं एसोसिएट रीजनल डायरेक्टर हूँ बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी की, जो कि एक यूके की बहुत पॉपुलर यूनिवर्सिटी है इंडियन स्टूडेंट्स के बीच में। हमारे पास बहुत इंडियन स्टूडेंट्स आते हैं हर साल। जैसे आपको अभी डेविड हमारे वाइस चांसलर ने बताया, 2000 से ज़्यादा इंडियन बच्चे हर साल हमारे पास पढ़ने के लिए आते हैं, और 20-30 हज़ार से भी ज़्यादा बच्चे हमारे पास अप्लाई करते हैं। बट कुछ ही बच्चे बेस्ड ऑन एंट्री क्राइटेरिया मीट कर पाते हैं क्राइटेरिया और सक्सेसफुली जा पाते हैं अपना वीज़ा सिक्योर करके। सो हम एक बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है, और हमारा इंटेंशन यहाँ पे आने का इस बार एक्चुअली काफ़ी सारे हैं। हम लोग अटेंड कर रहे हैं मेयरल मिशन, हम लोग वेस्ट मिडलैंड के मेयर के साथ में, हमारे वाइस चांसलर इनवाइटेड हैं, हम लोग इंडिया आए हैं, हम काफ़ी सिटीज़ टूर करने वाले हैं। हमने गुजरात से स्टार्ट किया, आज हम दिल्ली में हैं, कल वो मुंबई में होंगे, फिर बैंगलोर। एंड हम काफ़ी सारी मीटिंग्स, ऐसी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स एंड डेलीगेशंस को मिलने वाले हैं, जहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सचेंज बिटवीन इंडिया एंड यूके। आपको पता है रिसेंटली ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन हुआ है बिटवीन दीज टू कंट्रीज़, विच इज़ गोइंग टू हेल्प अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स गेट अपॉर्चुनिटीज़ बोथ वेज। मोबिलिटी दोनों तरफ बढ़ेगी, यूके से इंडिया, इंडिया से यूके, दोनों तरफ। सो हम लोग वो सारी डिस्कशंस एंड वो सारी एडवांसमेंट्स की बातें करने के लिए आए हैं। सो अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की डिग्री तक लिमिटेड नहीं है, बट उससे भी आगे जाती हैं, एंड दैट इज़ व्हाट वी आर हियर टू डिस्कस। मैम एज ए स्टूडेंट्स बच्चों के लिए क्या करियर ऑप्शंस आप लोग ऑफर करते हैं जिसकी वजह से वो इन्वॉल्व करें, कुछ उसके बारे में आप बताएं। सो एज अ यूनिवर्सिटी हम लोग करियर पे फोकस करते हैं, बट पहले होता है एक स्टूडेंट के लिए एक डिग्री डिसाइड करना, एक सब्जेक्ट एरिया अपना डिसाइड करना, कौन सा सब्जेक्ट में वो पढ़ना चाहेंगे, कहाँ वो अपना फ्यूचर देखते हैं। सो एक एज अ यूनिवर्सिटी हम उसका फ्यूचर नहीं डिसाइड करते। आई थिंक सबसे पहला जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है एक बच्चे की खुद की पोर्टफोलियो होती है, उसकी एकेडमिक प्रोफाइल, उसकी थॉट प्रोसेस कि मैं क्या कहाँ अपने आप को देखता हूँ। एंड हमारा काम एज अ यूनिवर्सिटी होता है टू शेप दैट आइडिया फर्दर। सो वी हैव सपोर्ट देम विद द बेस्ट ऑफ द फैसिलिटीज़ सो दैट दे कैन लर्न, दे कैन ग्रो, दे कैन डेवलप देयर स्किल्स। एंड पोस्ट दैट एज अ यूनिवर्सिटी हम अपना फ़र्ज़ वहाँ भी निभाते हैं जहाँ पे हम बच्चों को जॉब सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं बहुत अच्छे से, सो दैट उनको जॉब्स, अपॉर्चुनिटीज़, इंटर्नशिप्स, प्लेसमेंट सिर्फ यूके में ही नहीं अपनी होम कंट्री में भी मिले। एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग टुडे। हम अपने एलुमनाई को मिलने वाले हैं, हमारे बहुत सक्सेसफुल एलुमनाई को इंडिया में, जिन्होंने आई थिंक समवेयर इन 1980 1990 अपनी डिग्री ख़त्म की थी हमारे साथ। सो हम उनकी स्टोरीज सुनेंगे, हम वो भी शेयर करेंगे बच्चों के साथ, ताकि वो समझ सकें कि अपॉर्चुनिटी एक यूनिवर्सिटी के क्लासरूम में ख़त्म नहीं होती, बल्कि वहाँ से शुरू होती है। व्हेन यू वॉक आउट विद योर डिग्री, it does not end there. Your education or your connection with your university does not end there. It goes beyond, right? So that is what we are here to share. कितने प्रकार के कोर्सेज आपके यहाँ पे? बहुत ज़्यादा, हमारे पास 500 से ज़्यादा कोर्सेज होंगे एट बोथ अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। हमारे पास एमरेस कोर्सेज भी हैं, मास्टर्स रिसर्च, जहाँ पे बच्चे अपने डिपेंडेंट्स को भी लेके साथ में आ सकते हैं। सो बहुत तरीके के कोर्सेज हैं इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड। सो अगर एक स्टूडेंट इंटरेस्टेड है आर्ट में, बिजनेस में, इंजीनियरिंग, कंप्यूटिंग,
medical, anything, and I'm sure they will be able to find that with us at both or all levels rather. एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती हैं किस प्रकार की? बिल्कुल होती है, बहुत होती हैं। हमारी स्पोर्ट्स टीम्स काफ़ी फेमस है कैंपस पे। जैसे मैं आपको बार-बार फैसिलिटीज़ की बात कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा फेमस है हमारा कैंपस इसके लिए। सो स्टूडेंट को आर्ट में इंटरेस्ट है, वी हैव अ रॉयल बर्मिंघम कंजर्वेटोर। हमारी एक अकेली यूनिवर्सिटी है जिसके पास वो है फॉर एनीबडी हू लव्स आर्ट, म्यूज़िक, फेस्टिवल, उनको वो सब एक्सप्लोर करने के लिए मिलता है वहाँ पर। एंड हमारा लॉ चेंबर है। आप लोग मतलब जिस बच्चे को जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, उसको वो देखने एक्सप्लोर करने के लिए मिलेगा। हमारा कनेक्शन है विद BBC, वन ऑफ द बिगेस्ट चैनल्स, यू नो द मीडिया साइड ऑफ द वर्ल्ड, बिगेस्ट हमारा उसके साथ में कनेक्शन है। बच्चे हमारे पास ऑन कैंपस वो सारी फैसिलिटीज़ भी देख सकते हैं। काफ़ी सारी मूवीज़ हमारे कैंपस पे शूट हुई हैं। अगेन स्टूडेंट्स गेट टू बी अ पार्ट ऑफ ऑल ऑफ दैट, टू सी दैट, टू एक्सपीरियंस दैट। मैडम लैंग्वेज की बात की जाती है, कौन कौन सी लैंग्वेज वहाँ पे यूज़ कराई जाती है पढ़ने के लिए? सॉरी, लैंग्वेज कौन सी भाषाएं वहाँ पढ़ाई पे? के हाँ, लिए पढ़ाई के लिए। इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाया जाता है सब कुछ। और इसीलिए आइल्स बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। बच्चों की इंग्लिश यहाँ पर से अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। सो हमारे को बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि वीज़ा क्यों नहीं मिल रहा बच्चे को, UKVI ने रिजेक्ट कर दिया। एक्चुअली वो नहीं होता है। हमारा इंटेंशन है बच्चे को प्रिपेयर करना ताकि उनको इंग्लिश समझ में आए। वो एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री आ रहे हैं, उनको आनी चाहिए समझ में, पढ़नी, सीखनी, सो दैट वो अपने करियर में ग्रो कर सके। सो एक ही